draws a hand drawn visual, और आप लोग सब गूगल कर सकते हो. This data visualization technique is called a rose diagram. So she takes red ink, black ink and blue ink, and उससे एक वो rose का एक diagram बनाती है. And the red ink captures the number of soldiers who died because of infections. Black ink captures that area of the chart which soldiers died because of dangerous wounds. And the third is miscellaneous. And the data is very clear that more soldiers are dying in the hospital because of lack of basic hygiene. और ये वो दिखाती है उस सुपरिंटेंडेंट को, और सुपरिंटेंडेंट की आंखें ऐसे खुल जाती है कि अरे ये तो खतरनाक चीज है. This is the first example of data visualization and statistical modeling in 1854. आज से 170 साल पहले एक नर्स, जिसने नर्स की डिग्री भी नहीं करी थी, वो पहुंच गई और बैठ गई कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन, और मैं तो प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन का पढ़ाता हूं, खड़ी हो गई कि सर देखो ये चार्ट, एंड दिस इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट. और कौन सिखाएगा तुमको ये? चलो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सिखा दिया, बट दिस इज व्हाट यू स्टूडेंट शुड बी लर्निंग, कि कैसे मैं लोगों का दिमाग चेंज करूं. कोई आपको नौकरी नहीं देने वाला. You have to change their mind, और तब जाके you will become remarkable people like Florence Nightingale. So Florence Nightingale superintendent को change करती है, तो superintendent की आंखें खुल गई. Then the superintendent इतना impress हो जाता है कि मैडम आप चलो मेरे साथ इंस्पेक्टर जनरल के पास, who's like the big person who controls all the hospitals. Please remember, this is British colonies. In 1854, British was controlling around 100 countries. उनका काम ही ये था कि लोगों को स्लेव बनाया जाए, हम भी थे, और लड़ाई की जाए. पता नहीं उनका क्यों है ऐसा, और हम लोग आज भी मतलब we worship them कि बड़े आदमी हो आप लोग, तो we should stop doing it. उनका काम सिर्फ युद्ध करना था, और बहुत ही गंदगी युद्ध मचा रखी थी. And I'm very happy कि now for the first time India's GDP has moved ahead of that country. And in the next 2-3 years हम तो आगे पहुंचेंगे, बहुत बढ़िया बात है. And you students will take us forward. So coming back to Florence Nightingale, and so she now starts to present this rose diagram to Inspector General. And the Inspector General बोलता है मैडम मेरे पास कुछ 600 हॉस्पिटल है, I want this to be given to all my superintendents. तो she copies this and भेजा जाता है. She writes a handbook कि हॉस्पिटल को कैसे डिजाइन किया जाए. And she's a nurse, she's not even an architect person, कि भाई पानी कैसे होगा, sanitation कैसे होगा, हवा कैसे बहेगी, because that's what will help the soldiers. And then she writes a manual called Basic Nursing Qualities, Basic Cleanliness, कितना बचाना चाहिए, कैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए. All of this she documented, which is even taught in schools till right now. It has become the foundation of hospital administration. And my message number 1 to all you students is कि आपकी डिग्री आपको रिमार्केबल नहीं बनाएगी. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन कीजिए, कोलैबोरेशन कीजिए. अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मत बैठो. It will damage your lives. Please start collaborating with the world. Please start communicating with the world. Please use your communication skills. And English is not communication. आप लोग मराठी में बोलो, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे. And English is a language. Hindi is a language. Language को use करके communication कीजिए. And that's what Florence Nightingale did. That's why we remember her even till now. And that's why she's a remarkable person, number 1. Now let's go to remarkable person number 2. फ्लोरेंस नाइटिंगेल में थोड़ी खामियां भी थी. ऐसी कोई मतलब होता है ना कि नंबर 1 ह्यूमन बीइंग तो नहीं थे. एक्चुअली देयर इज नो नंबर 1 ह्यूमन बीइंग. वी आर ऑल फ्लॉड. हम में सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं. तो फ्लोरेंस मैडम भी थोड़ी ऐसी ही थी. तो देयर वाज अनदर पर्सन इन 1854 हु वांटेड टू बी अ नर्स. एक्चुअली नॉट इन 1854, थोड़ा 2-3 साल पहले की बात है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम. एक तो वो लेडी है, और नॉट वाइट लेडी, ब्लैक लेडी है. और उस समय ब्लैक होना was not a very good way. It was a racist community. तो this person is called Mary Seacole, और आप उनके बारे में गूगल कीजिए.
ये उनकी तस्वीर है। ये भी नर्स बनना चाहती थी, बट शी कम्स फ्रॉम वेरी अंडर प्रिविलेज्ड ब्लैक कम्युनिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम लंदन। और उस समय पहले तो आप लड़की हो तो पढ़ नहीं सकते, उसके बाद आप कलर्ड लड़की हो, इम्पॉसिबल। तो इमेजिन, शी गोज एंड सेज मुझे नर्स बनना है क्योंकि मुझे लोगों की देखभाल करनी है यार। एंड एवरीबॉडी सेड मैडम सॉरी आप नहीं आ सकते। दे डिडंट से कि आप ब्लैक हो इसलिए नहीं आ सकते। दे काइंड ऑफ सेड कि यू आर नॉट सर्टिफाइड, आप नहीं कर पाओगे, आप यहीं पे रहिए। सो शी हैड टू लिव हर लाइफ एंड शी कम्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। So she started to be a hustler, she became an entrepreneur, she started doing some trading, she started selling bread, biscuit, जो भी होता था, she figured it out. And she went to the hospital administrative people in London कि मुझे आप युद्ध में भेजिए, I will go and help the British soldiers, मैं नर्स बनूंगी और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के साथ जाऊंगी। तो मैं भेजा गया आपको। तो क्या करती हैं, शी buys a ticket on her own money and she takes a ship to स्कुटारी, टर्की, और वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पास जाती हैं। एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनको देखती हैं, देखती भी नहीं है एक्चुअली, शी सेंड्स एन असिस्टेंट एंड दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड, मैंने पढ़ा है और पिक्चरें देखी हैं, आप भी देखिएगा। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल डजंट इवन मीट हर, एक असिस्टेंट को भेजती हैं एंड द असिस्टेंट इंटरव्यूज मैरी सीकोल एंड सेज दैट यू डोंट हैव द क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ नर्स और हमारे पास पोजीशन भी अभी है नहीं, जब खुलेगा तो आपको बता देंगे। सो मैरी सीकोल सब कुछ छोड़ छाड़ के स्कूटारी पहुंच गई, अब कहाँ जाएगी, और नर्स बनने का ख्वाब था उनका। तो शी सेड कि ठीक है, अगर आप लोग मुझे नर्स नहीं बनाओगे भाड़ में जाओ, मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगी। सो इमेजिन 1854 a woman, that too a woman of color, starts her own venture, entrepreneurship। तो क्या करती है, शी गोज वेरी क्लोज टू द वॉर और वहां पे जो विलेजेस से उसको सामान मिलता है, दरवाजा, लक्कड़, स्टील, उस समय स्टील तो बहुत मुश्किल से मिलता था, आयरन में भी, whatever she could get, she creates a small establishment and calls it the British Hotel. She's very smart marketing. If she says British Hospital, somebody will say, Madam, you're not qualified to run a hospital. So she smartly markets and brands it as British Hotel. And she says कि आपको अगर भूख लग रही है तो आ जाओ, मैं आपको सैंडविच दूंगी। So British soldiers who are fighting that battle need food, and the food in places were very bad. So they go to her and she gives them soup and she gives them some bread and butter. So she starts to create a supply chain of bread, butter, brandy, rum, soup, mushrooms, जो भी ingredients होते थे, meat. She starts to bring it and she starts to help the British soldiers and gives them food. फिर British soldiers would come and say, "Madam, मेरे को पेट में दर्द है." So she would make some like a potion and give it to them. Somebody would come with a wound and she would nurse them. So she actually became a nurse on her own and she became an entrepreneur and she ran this establishment. Now, why is she very important? Is that in those years when students, not students, when soldiers would write letters to home, they would always say that Mary Seacole saved. And that's why Mary Seacole is remembered more than many people in those era. And in about 5-6 years ago, a statue was created in London. अभी भी controversy चल रही है उसके ऊपर, काफी politics चल रहा है because this black and white and caste system हमारे वर्ल्ड में काफी बढ़ा हुआ है, इंडिया में भी था, काफी कम हो गया है, but I think the world we are seeing is still very old in many ways and it takes time to bring change and you students should be aware of all these things. So the lesson from Mary Seacole is that if the world doesn't give you what you want, you have to do what you have to do it yourself. And that's what is entrepreneurship. आपको अगर जॉब नहीं मिली कोई बात नहीं, आप खुद ही बन जाओ अपना एंटरप्रेन्योर, खुद ही अपने जॉब क्रिएट करो एंड क्रिएट जॉब्स फॉर अदर्स एंड इट वॉन्ट बी इजी, बट आई थिंक थोड़ा उससे फायदा भी होगा और इतना आसान नहीं है. सो प्लीज रिमेंबर द स्टोरी नंबर 2 कॉल्ड मैरी सीकोल. And now my last story, story number 3, is even more complex. Uh, this story is somewhere in that same time frame. This person met Florence Nightingale, in fact was the boss of Florence Nightingale, superintendent नहीं थे, inspector general थे.
The name of this doctor and inspector general is Dr. Barry, Dr. James Barry, I think. तो इन समवेयर अराउंड 1865 जब क्राइमियन वॉर खत्म हो गया या 1867 उनकी मृत्यु हो गई. डॉक्टर बैरी डाइड. एंड डॉक्टर बैरी जब उनकी डेथ हुई तो द द लेडी हु वाज सपोज्ड टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर बरियल नोटिस समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि यार इनका नाम तो डॉक्टर जेम्स बैरी है, लिखा हुआ है मेल, बट ये बॉडी मेल नहीं है, ये तो फीमेल बॉडी है. So she gets scandalized because in 1867, imagine there is a very famous doctor, Dr. Barry, जो पिछले 60 साल से rose from a doctor position to inspector general position, and he's not a he's a she. So she tells the authorities, and a scandal breaks out. And the world gets to know of a remarkable person called Dr. James Barry, who actually was a woman all along. And this story is this third story. Her name was Margaret Bulkley. She was born in 1789. उनका ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, पर डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम. तो शी अप्लाइड टू मेडिकल स्कूल्स, बहुत छोटे से मेडिकल स्कूल्स एंड वेरी लिमिटेड, वेरी एक्सपेंसिव. एडिनबरा, Birmingham, and all these places. There were very few doctors in those days, and they said that a woman cannot do medical work because it requires muscle, which is ridiculous, and you need power to work like a doctor. Complete rubbish. But this is 18th century, so she fought with the system कि मैं मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती. And the answer was, you're a woman. So she, through some connection, जुगाड़ जुगोड़ के, she gets an interview with a very famous institute. और वो फॉर्म में ये नहीं डिक्लेयर करती कि मैं लड़की हूँ. She just fills the form that I am James Barry, और वो फॉर्म भेज देती है. तो वहां से इंटरव्यू कॉल आ जाता है और उसको एडमिशन मिल जाता है. सो दैट नाइट शी मेक्स अ डिसीजन कि यार एडमिशन तो मिल गया, फॉर्म पे मैंने लिख दिया कि आई एम जेम्स पेरी, सो नाउ लेट मी लिव लाइक जेम्स पेरी. सो दैट नाइट, which is in somewhere 1810, she becomes a man. How? She just dresses up like a man. तो वो जूते बड़े बड़े पहनती है, कपड़े मर्दों के पहनती है. She layers herself so that there is no doubt, and everybody thinks this, ये जेम्स पेरी थोड़ा अजीब आदमी है because थोड़ा सा छोटा है, चेहरा बहुत साफ है, आवाज भी लड़कियों जैसी है. तो she tries to speak like a man, ऐसे ऐसे करके, and somehow makes it. Or she gets through the medical exam, she gets through the system, and through luck एक physical examination होता है, she waves it off through some, जैसे होता है ना भगवान का blessing. Physical exam नहीं होता उसका, so nobody knows she's a woman, and she gets off and she gets a job in 1810. Now why is she remarkable? Somewhere in 1820s she was in South Africa, and the person, the general who was running South Africa, uski beti was pregnant, and she was the doctor. James Berry was a doctor there. So James Berry को बुलाया जाता है. The condition of this mother and child is very serious. The delivery होने वाली होती है, and James Berry, aka Margaret Bulkley, looks at this girl who's about to deliver and knows that ये बचेगी नहीं. So she performs the first cesarean operation. Actually, not the first, maybe the fifth or sixth, but maybe the first successful cesarean operation. And the child and the mother both survive, and she becomes world famous because she becomes the authority in cesarean sections. And she's a great doctor, but she's also a flawed person. अब मर्दों की तरह रहती है तो मर्दों की तरह बिहेव करेगी. तो she was very arrogant. She used to go to pubs and drink. वहां पे लड़ाई भी करती थी, एक बार गोली भी लगी उसको. वेरी फैसिनेटिंग. मेरे पास एक बुक पढ़ी है इनकी, है मैंने पढ़ी थी, बड़ी अच्छी बुक है. एंड what this story teaches us is that Florence Nightingale wanted to be a doctor but knew कि मैं लड़की हूं तो डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, so I'll become a nurse. So she compromised, but she also worked hard in the hospital administration and changed the system. Mary Seacole, because she was a black colored woman, first of all, she can't become a doctor or a nurse. So she becomes an entrepreneur. कि अगर आप मुझे नौकरी नहीं दोगे, मैं अपना अपना हॉस्पिटल खड़ा कर दूंगी.
Look at the kind of thinking. And third, मार्गरेट बल्कली कि अगर आप मुझे इसलिए डॉक्टर नहीं बनाओगे कि मैं लड़की हूं, तो मैं सिस्टम को फूल करके बन जाऊंगा। I'll become a man. क्या कर लोगे? And for 60 years she did this. And there are a lot of books written on her, movies written on her. She's considered the biggest fraud in the medical establishment. But again, these are all debates. Debates are debates. And the point I'm trying to make is, how far will you all go to fulfill your dream? I think this is what this story teaches us. So I'll probably now summarize my messages to all of you and then take you through these three questions. मुझे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं, व्हाट डू आई डू? सेकंड इज, मुझे बहुत डर लगता है सर, व्हाट इफ आई मेक अ रॉन्ग चॉइस? एंड थर्ड, how do I become successful on my terms? So here are my responses, and then if we have time, we'll do some Q&A. We have 15-20 minutes more. I'm very keen to do Q&A. Before I go there, Preeti ma'am, Jyoti ma'am, we can do Q&A, right? Okay. So I'll need your help. तो अगर वो question पूछ रहे हैं तो you can let me know and I can take that question. So here are my three messages to all you students. And I'm using my own experiences as an academic entrepreneur. मैं teacher भी हूँ, entrepreneur भी हूँ, confused हूँ, but ठीक है. I mean, it's called acadpreneur आजकल. So अपना ही कुछ term coin कर दिया मैंने. But basically, I'm running a company and I'm still a teacher at heart. And I was not designed to do it. I learned it along the way. I actually studied engineering. फिर उसके बाद मैंने MBA भी किया IIM Bangalore से part time. फिर मैंने PhD भी करी. And all those things happen. So what do I do with my life? Let's go through this first question. Here's my answer. I think all of you sitting and listening to me, I must tell you that career is like a journey. It's never a destination. So there is no, ऐसा नहीं है कि आज मैं consultant बनूंगा and that's the answer. That doesn't happen. You have to think very differently. And the best way to think is choose a direction which excites you. मान लो आपको, यू आर डूइंग एन एमबीए और यू आर डूइंग एनी एजुकेशन, और आपको मान लो, आई एम जस्ट मेकिंग दिस एग्जांपल, आपको घड़ियां बहुत अच्छी लगती, यू आर एक्साइटेड विद वॉचेस, आप सुबह से शाम तक बस वॉचेस के बारे में बात करते हैं। आई थिंक दैट्स द पाथ फॉर यू कि नाउ आई हैव टू फाइंड अ कंपनी दैट मेक्स वॉचेस और जाके मैं नौकरी करूंगा वहां पे। सो दैट्स हाउ डिसीजंस आर मेड। स्टार्ट विथ व्हाट एक्साइट्स यू। प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स में ये है, दे थिंक वेरी डिफरेंटली। वो लोग पहले तो कोरा पढ़ते हैं, फिर अपने सीनियर्स से बात करते हैं, फिर कोई बोलता है अमेजोन में अच्छी जॉब है, तो दे थिंक अमेजोन इज माय फ्यूचर, और वहां पे नौकरी मिलती नहीं है तो फिर उनको गुस्सा आता है, दर्द होता है, व्हाटएवर। सो दैट्स नॉट द राइट वे। आई मीन अमेजोन इज नॉट एक्साइटिंग। व्हाट इज एक्साइटिंग इज कि मुझे ये एक्साइटिंग लगता है, इससे मुझे मजा आता है। It could be books, it could be movies, it could be advertisement. Some of you could be very creative. आपको poster बनाने में बड़ा मजा आता हो. So that's what you should focus on. Choose a topic that excites you, जिससे आप बिल्कुल जिंदा हो जाओ and आंखों में चमक आ जाए कि ये topic मुझे अच्छा लगता है. खाना, I mean, you could even take food, but choose a topic that excites you, because that's where careers are built. और द रीजन आई बिकेम अ टीचर इज दैट आई लव्ड टीचिंग एंड कम्युनिकेशन। मुझे बड़ा मजा आता है। आई बिकम अलाइव। आप मुझे देखा कीजिए क्लासेस में, आई एम वेरी डिफरेंट, एंड व्हेन आई एम नॉट इन क्लासेस आई एम वेरी डिफरेंट, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव। एंड आई डोंट लाइक टू डू फाइनेंस। मुझे तो फाइनेंस में उल्टी आती है कि अरे क्या करवा रहे हो, मेरे को तो स्प्रेडशीट भी समझ नहीं आती। बट दैट्स व्हाई आई डिड नॉट बिकम अ फाइनेंस पर्सन। और मेनी टाइम्स मेरे एमबीए फ्रेंड्स कंसल्टेंट आजकल बहुत बोलते हैं। मैं एक बार कंसल्टेंट का रोल किया मैंने। आई फाउंड इट द मोस्ट बोरिंग जॉब इन द वर्ल्ड। और मीटिंग में बैठे रहो, प्रेजेंटेशन बनाते रहो, एंड आई फाउंड इट वेरी बोरिंग। आई एंजॉयड टॉकिंग टू पीपल, आई एंजॉयड ट्रैवलिंग, आई एंजॉयड प्रोडक्ट्स। मुझे सेलफोन लैपटॉप बड़े अच्छे लगते थे, टेक्नोलॉजी, वीडियो गेम्स। आई लाइक दैट काइंड ऑफ वर्क। तो मैं क्यों कंसल्टेंट बनूं? सो आई फाउंड अ जॉब इन सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ लैपटॉप्स एंड सेल फोन्स।
One day I realized कि मुझे teaching अच्छी लगती है, so I resigned and I became a teacher. So that's how my request is that what do you do with your life? Start by picking up a simple thing, what excites you. बस इतना बहुत है. And then your journey will move forward as we go along. So if there are multiple directions, कभी कभार students को होता है कि सर मुझे भी अच्छा लगता है, बुक्स भी अच्छी लगती हैं, मूवीज भी अच्छी लगती हैं, सेल्स मार्केटिंग भी अच्छा लगता है, एचआर भी अच्छा लगता है, whatever. Let's say there are multiple directions. So my request is pick up any one. You can take a coin and toss it, or you can just वो होता है ना, एक बोतल को घुमाओ और जहां पे रुक जाती है, choose that direction. And sometimes it helps कि ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करने का. You are all very young. 1-2 साल उस डायरेक्शन पे चले गए, कुछ सीखोगे, वहां से चेंज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है. सो यू हैव अ लॉन्ग लाइफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड आई थिंक यू शुड नॉट हेजिटेट टू choose one direction, but the direction should be very simple, something that excites you. Now the next one, अगर चॉइस गलत हो गया अब क्या करूं? That's a big problem. स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है इसमें कि सर मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, 1 साल खराब कर दिया मैंने. एंड आई से कि ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड, 1 year is precious, but my request to all of you is that if you are planning to live your life without failures, let me tell you the bad news. It is impossible. फेलियर तो होके ही रहेगा, गलती तो आप करोगे ही करोगे. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि बस मैं गलती मिनिमम से मिनिमम करूं, आई थिंक यू आर अ बैड एमबीए. एमबीएस डोंट थिंक लाइक दैट. गुड एमबीएस टेक रिस्क्स. एंड फेलियर होगा, फेलियर में दुख भी होता है, पैसों की भी लॉस हो जाती है, रिग्रेट्स भी होते हैं, दुख भी होता है. एंड व्हेन यू लुक एट इंस्टाग्राम, योर फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड और आपने गलती कर दी एंड योर करियर इज इन अ बैड शेप, दुख होता है, बट these are the foundations of life you must embrace. एंड जितना जल्दी एम्ब्रेस करोगे फेलियर को, उतना अच्छा है. आपकी जिंदगी में अगर कोई भी टीचर, कोई भी एंटरप्रेन्योर, और आपको बहुत बड़े बड़े लोग आके बात करते होंगे, इफ एनी ऑफ देम से दैट आई लिव माय लाइफ विद नो रिग्रेट्स, वो लोग झूठ बोल रहे हैं. Nobody, not a single human being on this planet can say that sentence. वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग छुपा रहे हैं. हमको सबको, we are all human beings, we all regret. I mean, I regret कि मैं आज ऑफिस आ गया, मैंने नाश्ते में इडली नहीं खाई, पराठा खा लिया. Regrets are everywhere. And I could have done better in my life if I have chosen my life earlier. So regrets will happen. So please don't listen to these motivational talkers जो बोलते हैं हमें कोई रिग्रेट नहीं है. एक नंबर के झूठे हैं वो लोग, उनको सुनना बंद कर दो. And I think the way you should understand them is, I think they have learned to deal with regrets. कि ठीक है, गलती हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, and we will move forward. So that's my request number 2. If you look at all the 3 people, Florence Nightingale, Mary Seacole, and James Barrie, they all would have regrets. We have to embrace regrets and failures and move on with life. So that's my second message. And my last message, how do I get success on my own terms and right now? And the answer is, sacrifice के बिना कुछ नहीं होने वाला. आप लोगों को सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए, वो नहीं होने वाला. So please remember these 2 words. The first word is sacrifice, and the second word is patient. Time will give you something, but with time will also take you something. The question is, what are you willing to sacrifice? The question is, how long can you wait before you become successful? I know I'm now sounding like a grandfather, but I think wisdom of life is very simple यार. कि ये जो आप आजकल, I know ये यूनिकॉर्न की स्टोरियां बहुत पढ़ रहे होंगे. What you don't see is the sacrifices and the patience these people have gone. कोई भी बिलियनर नहीं बनता लक के हिसाब से. Tremendous sacrifices, tremendous failures, tremendous patience. कई लोग 20-25 साल बाद सक्सेसफुल बने, and only on unicorn status. So please stop reading these famous VC discussions कि मैंने लास्ट ईयर शुरू करी, आज $3 billion का वैल्यूएशन है, $60 billion का वैल्यूएशन है. ये सब न्यूज है. It is just a scene
बिहाइंड द सीन द हार्ड वर्क यू डोंट सी। और अगर आपको बड़ा बनना है, सैक्रिफाइस और पेशेंस तो करना ही पड़ेगा। तो ऑल ऑफ यू हु आर एस्पायरिंग टू बिकम अमेजिंग ह्यूमन बींग्स, विदाउट दीज टू वर्ड्स आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड दुख आप ही को होगा। टीचर्स लाइक मी कैन जस्ट कम एंड से सम ज्ञान और हम लोग चले जाएंगे। एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज फुल ऑफ सैक्रिफाइस एंड पेशेंस। I have to be patient. I have no other option. And if you don't have these two qualities, it will be very hard for you. So please sacrifice. If you want to become big, you have to sacrifice party, you have to sacrifice friends, you have to sacrifice travel. लगे रहो काम पे। और अगर आपको वो नहीं करना है, ट्रैवल भी करना है, इंस्टाग्राम पे फोटो भी दिखानी है कि हम लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये सक्सेस नहीं मिलने वाली। सो चूज योर बैटल्स, एंड आई थिंक यू शुड बैलेंस योर लाइफ। ट्रैवल भी करो और सक्सेस भी करो, बट पेशेंस के साथ। सो स्ट्रेच योर लाइफ टू अबाउट 50 years, 60 years। डोंट बी इन अ हरी कि मुझे 3 साल में सब कुछ करना है, 5 साल में सब कुछ करना है, एंड बी विलिंग टू लेट गो ऑफ सम ड्रीम्स। So this is where I will stop. Invest in the following, and this is where I'll stop. What should you students do? First, invest in the following skills: influence and persuasion. अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपकी डिग्री विल गेट यू समथिंग, बट बियॉन्ड दैट नथिंग। रिसर्च कीजिए, प्लीज लर्न द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। प्लीज पढ़िए, एंड नॉट व्हाट्सएप एंड कोरा। बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट देखिए, सुनिए, मूवीज देखिए, एंड गो डीपर इनटू इट। Third, please network and collaborate with each other. I can't tell you how important this is. Fourth, कुछ भी प्लान करो लेकिन एग्जीक्यूट करो, ज्यादा सोचो मत। भले ही रिजल्ट खराब आए, लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। एंड फिफ्थ, बी entrepreneurial. This world needs students who can do a job but also are very entrepreneurial. उनको एक्सपेरिमेंट करने से डर नहीं लगता, पैसे कमाने से डर नहीं लगता। And money is the factor of success, don't forget it. If you produce money very quickly, which is very entrepreneurial thinking, you will probably survive the 21st century better. But please be ethical. Don't do anything unethical which will backfire against you. This is where I will stop talking. बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ बात करने में, and I would now request you to ask me some questions if you have any. I can hear you. Yes, madam.
and Hello. taking Hello. opportunities and advantage of technological advances. Sir also talked about Mary Seacole, her dedication, hard work, and pursuance skill. Sir talked about Dr. James Barry, that is Margaret Aka, and how she disguised as a man just to pursue her career and of her own choice and fulfill her dream. uh, Sir guided us to choose a direction that excites us and enables us to come alive. He also said that failure is inevitable. One should learn to deal with problems and accept mistakes and look forward always. In the last but not the least, Sir said that sacrifice is unavoidable. Everyone who is successful has sacrificed a lot, and one should possess patience and fight until he gets the success. Thank you so much, sir, for accepting our invitation as a guest of honor. We heartily thank you. And now, thank you so much, sir. uh,